गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। ओके, प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एवरी यूथ ओके, एवरी यूथ हैव टू रिस्पेक्ट हिज ओन सेल्फ। ठीक है, सभी को ऐसे करना चाहिए। मैं यूथ को खास तौर से इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये लेक्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चे सुनते हैं, इसलिए मैं उनको फोकस, उन्हीं को मैसेज दे रहा हूँ, उन्हीं को कह रहा हूँ कि आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रिस्पेक्ट कैसे खुद करनी है, ये भी बड़ी बात है कि भाई कैसे अपनी रिस्पेक्ट खुद करें। अपनी रिस्पेक्ट तब होगी जब आप अपनी वैल्यू करेंगे। आप कोई भी थॉट अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं किसी दूसरे का, तो पहले आप खुद उसको एनालाइज करेंगे कि कितना वो सही है। ओके, itself you have to analyze at what stage that particular thought is right or wrong. Okay, you have to itself you analyze. ऐसे भीड़ के पीछे नहीं भागते। किसी भी पॉलिटिकल थिंकर ने या किसी भी लीडर ने अगर कोई थॉट कह दिया, आप उसको फॉलो करने लगे, ये चीज सही नहीं है। इसका मतलब आपके अपने कोई थॉट्स ही नहीं है। इट मीन्स दैट यू डोंट हैव योर ओन थॉट्स, यू डोंट हैव योर ओन आइडियोलॉजी। इट इज नेसेसरी फॉर यू टू मेक योर ओन आइडियोलॉजी, ओन थॉट्स। ओके, ऑलवेज जज what others are saying. ब्लाइंडली किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। डोंट एक्सेप्ट एनी थॉट ब्लाइंडली। because in society there lot of the thoughts are there, lot of the ideologies are there, and especially you just follow the blindly, इसीलिए आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। So it is necessary for you to always analyze what the person is saying. Okay, अगर कोई लीडर है या कोई पॉलिटिकल थिंकर है, आप किसी की भी बात सुनते हैं, ठीक है, तो आप उसको एनालाइज करो भाई, वो किस हद तक सही है, वो कह रहा है कि सही है कि भी नहीं, ये भी आप देखो एक तरीके से। ओके, ऐसे आप ब्लाइंडली किसी के पीछे चले जाओगे, एंड में क्राइसिस, आपको भी कैजुअलिटी हो सकती है, सोसाइटी को भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर मैंने देखा है, यूथ क्या होता है, सोशल नेटवर्क में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। सो मतलब कि आप कोई सा भी मैसेज होगा, सोशल मैसेज, आप फॉरवर्ड कर दोगे, कोई सी भी आइडियोलॉजी आप फॉरवर्ड कर दोगे, सपोर्ट कर दोगे, आप उसे चेक नहीं करोगे किस हद तक वो सही है, वो सही है कि भी नहीं है, बस आप उसे क्या करोगे, फॉरवर्ड इट, यू सपोर्ट दैट मैसेज। So this thing is wrong. It is necessary for you to check the ethical value, norms, okay, standard, ideology of that particular message. कितना हद तक वो सही है, that is important. ठीक है, ऐसे ब्लाइंडली किसी के पीछे जाने का नहीं है कि बस बोला इनकलाब जिंदाबाद चल दिए, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद देखना है कहां तक सही है। तो ये चीज आपको, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल मीडिया में मोस्टली जो यूथ होता है वो अपना टाइम वेस्ट कर देता है, अननेसेसरी के पोस्ट डालना। ठीक है भाई, वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है, स्टेटस लगा देना, वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है। ओके, पोस्टिंग द स्टेटस एंड ऑल्सो टाइम टू टाइम, भाई पोस्ट कर दिया तब तो ठीक है, उसको चेक भी कर रहे हैं कितने लोगों ने लाइक किया, हर 1 घंटे बाद कितने लोगों ने डिसलाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, दीज थिंग्स रेगुलरली यू चेक इट।
wasting of time. That's why your energy is diverting in a wrong direction. ठीक है, अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो आपको अपनी एनर्जी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेट करना है, और वो डायरेक्शन राइट होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन राइट नहीं है तो इसका मतलब है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप किसी और को बड़ा बना रहे हो और अपने आप को बस नीचे रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अक्सर देखा है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मार्ट पर्सन कौन है, आप किसी हीरो का नाम ले लोगे। सबसे ब्यूटीफुल है पर्सन कौन है, आप किसी एक्ट्रेस का नाम ले लोगे। अरे भाई अपना नाम खुद लो ना, क्या दिक्कत है? भगवान ने इतना अच्छा चेहरा दे रखा है, इतने अच्छे फीचर्स दे रखे हैं, तो यू कंसीडर योरसेल्फ द मोस्ट स्मार्ट पर्सन, यू कंसीडर योरसेल्फ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। ठीक है, अननेसेसरी आप दूसरे को बड़ा बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए, डेमोक्रेसी में आप किसको, आप रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते, यू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू सर्व द पब्लिक, एंड इन डेमोक्रेसी द पब्लिक इज कंसिडर्ड एज अ किंग, बट इन रियलिटी इट इज जस्ट अपोजिट। पब्लिक कुछ नहीं मिलता पब्लिक को। ठीक है, पब्लिक देखो धक्का खाती रहती है। इलाइट क्लास, और इलाइट क्लास में आप समझ लो सब कोई आते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स, टॉप पॉलिटिशियंस, ये सब इलाइट क्लास में आता है। ठीक है, बिग बिग बिजनेसमैन, बिग बिग लीडर्स, यही सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं। पब्लिक एट अ ग्राउंड लेवल सफरिंग। क्यों? क्योंकि कभी पब्लिक ने अपनी रिस्पेक्ट करी नहीं। दैट्स व्हाई पब्लिक इज सफरिंग, दे ओनली जस्ट फॉलो द आइडियोलॉजी। ठीक है, अपनी अगर रिस्पेक्ट करी होती तो आज भारत की जनता का ये हाल ना होता। ठीक है, हम लोग, जो यूथ है हमारा, वो इतना अनएम्प्लॉयड ना होता। क्यों? अपनी रिस्पेक्ट नहीं करी, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, सामने वाले पे ज्यादा भरोसा है, जो वो कह रहा है वो ज्यादा सही कह रहा होगा, वो ज्यादा अच्छा कह रहा होगा, वो ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा अच्छा सोच सकता है। अरे भाई तुम क्या कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट रखता है। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू थिंक योरसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप किसी भी रैली में देख लीजिए, पब्लिक ग्राउंड में बैठी रहती है, धूप में एकदम, बारिश में, छाता लिए। जिस लीडर को आपने इलेक्ट किया होगा वो वीआईपी चॉपर से आएगा, वीआईपी सिक्योरिटी में आएगा, स्टेज में अच्छा सा स्पीच देगा, एकदम, वो भी भाषण देते वक्त भी एसी चल रहा है चारों तरफ। ठीक है, और आप पब्लिक सुन रहे हो आराम से, धूप में या बारिश में। ठीक है, जमीन में बैठे हुए हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, जबकि आप ये नहीं समझ रहे हो वो जो लीडर वहां जो लेक्चर दे रहा है वो आपकी वजह से ही दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्यों ऐसा हो रहा है, और फाइनली फिर क्या होगा? बस 4 लड्डू मिलेंगे, काम खत्म, जाओ अपने घर। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने कभी भी अपनी वैल्यू नहीं समझी। जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं करेंगे ना, कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इफ यू विल नॉट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, नो वन विल रिस्पेक्ट यू। ओके, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, अपना सम्मान खुद बढ़ाएं, तभी दूसरे आपका सम्मान बढ़ाएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ओके, ऑलवेज रिस्पेक्ट योरसेल्फ, देन ओनली अदर्स विल गिव रिस्पेक्ट। अगर आपने किसी और को रिस्पेक्ट दे दी और अपनी रिस्पेक्ट नहीं करी तो फिर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। गॉट इट?
Now we will start our lecture. Now let's start our lecture. Okay. Last topic we cover it, that is nuclear doctrine of India. Okay. So just repeat quickly. Okay. Quickly we will repeat it. Now this particular doctrine was first proposed in 1999 and officially it was accepted in 2003. Okay. Now the basic principle of this doctrine is, that is no first use. This is the basic principle, and the following features of this doctrine is: number one, that is there is voluntary moratorium on the further nuclear test explosion. It means that presently at that time there is a temporarily ban is there on the nuclear test explosion. But if in future India want to do the nuclear test explosion, India can do it. Okay, it is just a temporary ban. Okay. Second, no first use of nuclear weapon during the any critical situation or during the war type of the situation. India will not use the nuclear weapon at the initial stage. For example, if any the critical situation arises between India and Pakistan or any XYZ country, so at the initial stage or the first time, India will not use the nuclear weapon. Okay. Next, India will also not use the nuclear weapons against those states which don't have the nuclear weapons. But if in any situation that particular state uses nuclear, biological, chemical, or any other major attack against the India, then in the retaliation, the India can use the nuclear weapon. ठीक है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अगर उसके साथ कभी वॉर जैसी सिचुएशन अराइज है, क्रिटिकल सिचुएशन अराइज होती है, तो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा. बट if that particular state uses the any biological weapon or chemical weapon or other the major strike against India, then India in the retaliation will use the nuclear weapon, has an option to use it. Okay. Next, India will establish the minimum credible number of the nuclear weapons. Okay. It means that the number of the weapons India have the nuclear weapons, it will be the minimum number. Okay. It will maintain the minimum number. But the limit, the how many nuclear weapons India have to make it, it will decide by the India and it will vary in the future. ठीक है. फ्यूचर में फॉर एग्जांपल अगर हमें रिक्वायरमेंट है 150 की, तो वी विल प्रोड्यूस द 150. ओके. लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि वी विल प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट. ओके. हम लोग ऐसा नहीं, वी विल ट्राई टू प्रोड्यूस द मिनिमम नंबर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स. ओके. दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन. Next, topic: International Atomic Energy Agency. In short, it is called as IAEA. Okay. In short, it is called as IAEA. In most of the fields, okay, in most of the fields, there is always a international organization. Okay. For example, space, health,
trade, banking, extra. Okay. Same thing in atomic energy also field. There is also the international organization. Now the question arises, why these international organizations are established? Okay. Simple reason is that to set up the uniform standard throughout the world. ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड में एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेटअप हो सके. देयर शुड बी द सेटअप ऑफ यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस. यूनिफॉर्म गाइडलाइंस शुड बी सेटअप ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए these organizations are set up. Okay, because when they form the when all the countries or those countries who are the member of particular organization sit at a one platform, okay, they will give the uniform guideline. They will set a uniform standard which will be accepted by the countries which is a member of the particular organization. That's why to set up the standardness, these international organizations are established in different fields. For example, space is there, health, trade, banking. Okay, in most of the field have the international organization. Okay, now we will see this particular organization. This particular organization was formed in July 1957 and its headquarters is in Vienna, that is in Austria. This is an international organization, or you can say the platform, where different scientists and the technical cooperation will sit at one platform and set up the standards and the rules and regulation in the atomic field. ठीक है, वर्ल्ड लेवल के different countries के scientists, okay, and the corporate technical corporate persons are sit at the one platform and set up the rules, standards in the field of the atomic energy. Okay, now its main work is to promote safe, secure and the peaceful use of the atomic energy. This is one of the important things. As you know that the atomic energy can cause a great disaster also. So for the promotion of the safe, secure and the peaceful use of the atomic energy, this is the one of the main aim of this organization. Okay, and this organization report both UNGA also and UNSC also. Okay, UNGA, that is United Nations. What is GA? Yes, General Assembly. Speak loudly. Okay, it's so good. And UNSC, United Nations Security Council. Okay, so this particular organization reports both of them. It's also inspect the existing nuclear facilities all around the world. Okay, different countries who have these nuclear facilities, so this particular organization used to inspect it, whether that particular country is using the nuclear technology or nuclear techniques and equipments in a right direction or not. Okay, so this particular organization used to check it and also provide the information and the developing standard so that to ensure the safety and the security. Okay, क्योंकि अगर standard procedures नहीं होंगे so there will be no safety, there will be no security. So that's why this particular organization provide the standard procedures, rules and the regulations to enhance the safety and the security of the nuclear facility. ठीक है, so that's why this particular organization plays a very vital role. Country चाहे कोई सा भी हो, okay, this particular organization provide the uniform security and the safety standard procedure to the every country. Okay, now
It also acts as the on the behalf of the various field of the sciences, so that the peaceful application of the nuclear energy should be take place. Okay, क्योंकि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, the particular technology, especially this type of the technology, it is only benefit when it is used for the socio-economic development. Remember this thing. Okay, when these type of the technologies are used for this particular purpose, then it is okay, and then it is benefit for the society. Otherwise it creates the great disaster. Okay, main aim is that of this particular organization to use the nuclear energy for the socio economic development. ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ओके, नेक्स्ट. नाउ वी विल सी India's 3-stage nuclear power program. Write the heading. इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था 1954 में. इट वाज लॉन्च इन 1954 एंड इट हैज अ 3-stage डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, 3 stages थे एंड ईच स्टेज have the different kind of the fuel used in the nuclear reactor. ठीक है, ये जो स्टेज डिवाइड करी गई थी, इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल यूज इन द पर्टिकुलर रिएक्टर. ठीक है, नाउ वी विल सी. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेज, हियर द heavy water reactor is fueled by the natural uranium. Okay, here okay, this heavy water reactor is fueled by the natural uranium, and that would produce the plutonium. Okay, now this plutonium which is produced in the first stage, that will use as a fuel in the second stage. Okay, remember, because I already told you that in a nuclear reaction the nuclear material is used, and after the reaction, okay, the waste which is produced is also the nuclear material. It can also be further used. Okay, so that's why in India the nuclear program is divided into the 3 stages. Okay, so that on the basis of the fuel used in the particular stage. Okay, first stage, see, nuclear uranium is used and that will produce the plutonium, and that plutonium will consider as a fuel in the second stage. Okay, after mixing with the natural uranium again. Okay, now further at a third stage there will be the thorium, and the uranium will consider as a fuel in the reactor. Okay, presently India achieved the success in a first and the second stage. Okay, first and the second stage we got the success, and the third stage is under the development. Okay,
India is developing, and or you can say working on this particular stage. Okay, so here you have to remember the fuel which is a used in a reactor at which stage. Okay, that is important for the examination point of the view. Remember, first stage, it is natural uranium. Second stage, plutonium and natural uranium. Third stage, thorium and the uranium as a fuel. This uranium is come from here. Okay, so this is the important stage, and presently India is working on this particular stage. Got it? Any query? Now we will see the different application of the radioactivity. Okay, we will see different application of the radioactivity. Now, first is agriculture field. Okay, now radioisotopes are also used in the development of the mutant crops. Okay, mutant crops are the hybrid crops. Okay, different crops such as wheat and rice type of the crops are these are the mutant crops. Okay, their varieties are there. Okay, and these hybrid crops are the resistance against the different type of the diseases, pest. Okay, जो म्यूटेंट क्रॉप्स होते हैं उनमें जल्दी इन्फेक्शन या डिजीज नहीं लगता, पेस्ट का इम्पैक्ट नहीं होता. दैट्स व्हाई इन दीज क्रॉप्स low level or you can say no chemical are used. Okay, because they are the automatically disease resistance. Okay, so these crops are the important crops. Okay, second, with this particular technology we can also use as a tracer technique. Okay, tracer technique means that how much amount of the chemical in any form, whether it is a fertilizer or whether it is pesticides, the particular crop consume. ठीक है, कितना वो consume करता है, we can determine it with the tracer technique. ठीक है, क्योंकि आपको पता है पर्टिकुलर क्रॉप जो होता है वो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द केमिकल ही को कंज्यूम करता है. इट कंज्यूम द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द केमिकल्स ओनली. ओके, रिमेनिंग अगर आप एक्सेस में यूज करते हैं इट ओनली इफेक्ट द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो पुट द एडिशनल कॉस्ट. बट विद द हेल्प ऑफ द ट्रेसर टेक्निक, okay, with the help of this particular technique we can determine the crop how much level of the chemical it will consume, कितना वो chemical consume करेगा. Okay, if we able to know this particular amount, definitely the farmers will use only that amount of the chemical in the crop. Okay, it will save the time and the cost of the farmer. Okay, जो एक्स्ट्रा बर्डन जो फार्मर्स पे पड़ जाता है केमिकल फर्टिलाइजर का, वो इसको रिड्यूस कर सकता है. ओके, नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो कंट्रोल द पेस्ट एंड इंसेक्ट विद दिस पर्टिकुलर टेक्निक. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फील्ड. ओके, एंड it is infected by the pest and the insects. Okay, now when this particular field the gamma rays are passed, okay, with the limited intensity, then these insects and pest dies away and your field will become pest and insect free. Okay, they automatically get killed. Okay, इनमें इतना एनर्जी नहीं होता है कि वो गामा रेज की हल्की सी भी इंटेंसिटी को वो सह सके. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर फील्ड. ओके, if it is infected by any pest and the insect, okay, then the gamma rays are passed through this particular field. So automatically
यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट्स होंगे, पेस्ट होंगे, they will die. Okay, in this way we able to control the pest and insect also. Okay, and also it reduces the cost of the use of the pesticides and insecticides. Okay, because if they kill, no need to use the excess pesticides and the insecticides. Okay, this is one of the important application of the radioactivity. Okay, next, in the health area also, radioactive element like cobalt 60 and the arsenic 72 are also used in the treatment of the thyroid and the cancer. Okay, these are the dangerous diseases, and with the help of the radioactive element, okay, that is cobalt 60 and the arsenic 72, we used to treat the cancer and the thyroid disorders. Okay, even for the industrial area also, for the food preservation. Okay, for example, कोई food होता है, वो अगर किसी, for example, crop जब land से आता है, तो it consists of the small microorganisms. ठीक है, insect भी हो सकता है, pest भी हो सकता है. अगर आप उसको directly pack कर, if you pack directly, definitely it will, after some time it will destroy it. Okay, now that food, when it passes with the radioactive radiations, okay, definitely this particular process is done in a controlled manner. Okay, then in this way the insects or pests automatically get killed, and after the food preservation it enhances the life of the particular food. ठीक है, जितने भी आप प्रिजर्व फूड खाते हैं, तो मैक्सिमम जो फूड होते हैं इसी पर्टिकुलर प्रोसेस से प्रिजर्व किए जाते हैं. And the preservation of the food which is done with the help of the radioactivity, that process is called a food irradiation. Okay, that particular process is called as a food irradiation. Got it? Next, for the inspection of the industrial products. Okay, for the quality inspection, see, in the industry there is a manufacturing of the different parts and different machineries are there. Okay, so by our naked eyes it is not possible to get the defect in that particular part. Okay, especially the heavy engines are there. Okay, big automobile engines are there. So from the outside you will see it is okay, but maybe from inside it is any defect will be there. So for that part now is placed to check that defect, the radioactivity part is there. Okay, आप उस particular engine को put that engine in front of the X-ray, and then in the film we get the structure of that engine part, and automatically we able to came to know which part is defected inside. It is just like that from the X-ray which is done of the human body. Okay, to determine the internal fractures of the bones. Okay, or any minor crack, you used to do the X-ray, no? X-ray and the MRI is there. Okay, now these particular technique help to determine the internal fracture in our body. Same thing is happening over here also. To determine the internal defect in the industrial any particular product, or you can say, or the vehicles engines, or any particular part is there. Okay, that particular part is put in front of the X-ray, and the film is put behind the particular part, and that image is captured in that film. Okay, and in this way you able to determine the defect of that particular part.
So this is one of the important technique. Okay, because there are the different huge engines are there, huge machinery parts are there. So to get the internal defect, to check the internal defect, okay, this is a particular technique is necessary. Okay, because for the in the normal conditions, you're not able to judge what is happening inside, what has happened in that particular part. Got it? Next, in space also, nuclear batteries. Okay, this is a different example. Nuclear batteries are the used to get the power to the space mission. Okay, in the space, nuclear batteries are the used. In space, two type of the sources are there where the satellite and different rovers get the energy. First is solar. Yes, first is solar. Okay, these satellites and these rovers which place into the space, they get the energy from the solar panels which are placed, okay, along the satellite. And second is nuclear batteries. Okay, these nuclear batteries consist of the radioactive element. Okay, these nuclear batteries consist of the radioactive element and they give the energy. Okay, for the long duration mission, these nuclear batteries are used. Okay, for long duration. And solar panels are also nowadays used. Okay, solar panels. So these are the two important source of the energy in the space. These are the important application of the radioactivity. Okay, nowadays, see, important thing is that nowadays this health and the industrial area, these two areas are important. Okay, because you know very well, cancer type of the diseases, normal treatment is not there. Okay, so this particular technique is used to tackle these type of the harmful diseases. Okay, next, in the industrial area also, for the inspection, the quality control of the industrial products, this particular technique is used. Okay, even also in construction also, because see, large construction sites such as refineries, such as construction of the dams, okay, construction of the big chemical plants, there the construction foundation should be very strong. Okay, if during the concrete pouring or during the civil work, if any defect is there in the foundation, the whole system will be collapsed. Okay, so how to check the any defect in the inside the structure? Okay, for example, this is the foundation of the in a chemical plant. Larger vessels are there, compressors are there. Okay, now how and they are placed on the particular foundation. Okay, वो एक particular foundation पे उनको रखा जाता है. So how to determine the internal defect of that platform of the compressor? Okay, normally we can't see it, what is the defect inside. Now with the help of the X-ray system over there, same system over there, we can detect the internal defect. Okay, that particular foundation, if you want to check any defect, then the X-rays are passed from that particular system and the film is put this side and the image came on the film. Automatically we be able to know if there is any defect in that foundation. Okay, so these type of the construction, whether refineries, chemical plants, these require the very strong foundation. If there is any defect, it will bring the great casualty. Okay, in those areas also these techniques are also used.
जस्ट इमेजिन दिस पर्टिकुलर टेक्निक लाइक द एनी डिफेक्ट इन आवर बॉडी. ओके, हम अपने अंदर के फॉर एग्जांपल कोई भी अगर डिफेक्ट होता है, नॉर्मल अगर बोन्स क्रैक होता है या कोई फ्रैक्चर होता है, हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? वी डिटरमाइन बाय द एक्सरे. सिंपल थिंग इज देयर आल्सो. ओके, अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में अगर फॉर एग्जांपल हमें डिफेक्ट डिटरमाइन करना है, हमें सिंपल सा उसका एक्सरे लेना पड़ेगा. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ this is also the important area where this radioactivity is substances are used. First is to controlling the insect and the pest. ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पूरा पेस्ट फैला हुआ है, इंसेक्ट फैला हुआ है, बस पास करवा दिया गांव वाले आराम से, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड के, सारे इंसेक्ट और पेस्ट ऑटोमेटिकली किल्ड. ओके, cost of the production reduces, cost of the pesticides and the insecticide reduces. ठीक है, ऑटोमेटिकली गुड क्रॉप. ठीक है, और ये जो सिस्टम जो करा जाता है, ये सिस्टम जो पूरा जो स्टार्ट किया जाता है, वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है. ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ दैट गामा रे इज अंडर द कंट्रोल, ताकि आसपास में कोई डिफेक्ट ना रहे. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द म्यूटेंट क्रॉप इज ऑल्सो देयर. ओके, ताकि जो क्रॉप जो डेवलप हो, दैट इज अ हाइब्रिड क्रॉप. ओके, हाइब्रिड क्रॉप इज डेवलप. ठीक है, ताकि इट शुड बी हैव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द वेरियस डिजीजेस, और इसकी प्रोडक्टिविटी भी हाई हो, यील्ड भी हाई होगा. ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस रहेगा कोई भी डिजीजेस के अगेंस्ट, देन डेफिनेटली देयर विल बी लेस यूज ऑफ द chemicals, will be there, less use of the pesticide and insecticide will be there. ठीक है, और प्रोडक्शन भी हाई होगा. ठीक है, so these crops are called as the mutant crops. Okay, these are the important areas where the application of radioactivity substances. Okay, any question? Any question? So for today, these are the important topics. Okay, tomorrow we will complete the remaining topics. So thank you to all of you. Have a nice day.